if we have a ketone that is conjugated with a carbon-carbon double bond. So this is the general structure for enones. You know that if we have a ketone that is conjugated with a carbon-carbon double bond, we call it an enone. So and the carbon that is next to the carbon in carbon is known as the alpha carbon. The carbon that is next to the alpha is beta, gamma, delta, and so on. So if you have an acyclic enone or an enone in a six-membered ring, then the base value is 215. In a five-membered ring, the base value is 202. And if you have a dienone, if we have double bonds on both sides of the ketone, then the base value is 245, because it is now, this ketone is now in conjugation with two double bonds, so that increases the lambda mix value. So you can expect that we've added 30 with 215 for extended conjugation. And then we can have or we can add different increments for double bond extension or alkyl residues at alpha, beta, or gamma positions, and of course for the different polar groups at alpha, beta, gamma, or delta positions. If we have an exocyclic, again we add 5. If we have a homocyclic diene component, then we add 39. So अब देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इनोन्स को. सो वी हैव एन एसाइक्लिक इनोन फर्स्ट. एसाइक्लिक में आप देखें आपके पास एक कीटोन है जिसके साथ एक डबल बॉन्ड अटैच है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे, अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है. सो बिकॉज इट्स एसाइक्लिक तो बेस वैल्यू 245 आप ऐड करेंगे. फिर आपके पास अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यूज, सॉरी अल्काइल ग्रुप्स हैं. तो अल्फा पोजीशन पे जो अल्काइल ग्रुप है उसके लिए 10 ऐड करेंगे. एक ही है अल्फा पोजीशन पे तो 10 ऐड किया. बीटा पे आप 12 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 है तो आप दोनों के लिए 24 ऐड करें. और अगर आप देखें तो प्रेडिक्टेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एग्जैक्टली सिमिलर भी है. फिर हमारे पास 6 मेंबर्ड इनोन है. तो 6 मेंबर्ड इनोन में देखें तो हमारे पास जो बेस वैल्यू होती है दैट इज 215 नैनोमीटर. 215 ऐड करेंगे. फिर हमारे पास एक्सटेंशन भी है कॉन्जुगेशन. तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 अलग ऐड करेंगे. और अगर आपके पास जैसे होमो एनुलर डाइन सिस्टम भी मौजूद हो या होमोसाइक्लिक डाइन कंपोनेंट भी मौजूद हो तो उसके लिए 39 अलग से ऐड करेंगे. मतलब ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ये दूसरी रिंग के साथ भी तो हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई रिंग हो, ये हो, तो फिर ये ट्रांसॉइड है, ठीक है. तो उसके लिए फिर आप ये 39 ऐड नहीं करेंगे. बट वी हैव अ होमोसाइक्लिक डाइन सिस्टम, तो उसके लिए आप 39 भी साथ में ऐड करेंगे. रिंग रेजिड्यूज कितने हैं? सबसे पहले देखें पोजीशंस कितने हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनोन्स तो पोजीशन देखें. अल्फा पे नहीं है, बीटा पे नहीं है, गैमा पे नहीं है, डेल्टा पे एक है. और डेल्टा पे आप 18 ऐड करते हैं तो एक ही रिंग रेजिड्यू है, 18 ऐड करें. 302 इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है दैट इज 300 nanometers. Right, so this is how you predict the lambda mix for enones. ये 5 membered ring के लिए है. 5 membered की वैल्यू जो है बेस वैल्यू दैट इज 202 नैनोमीटर. 5 membered में देखें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और बीटा पोजीशन पे आपके पास 2 रिंग रेजिड्यूज हैं यहाँ पर. तो उसके लिए आपको अगर याद हो आप 12 ऐड करते हैं तो 2 के लिए 24 ऐड करेंगे. और ये जो डबल बॉन्ड है नाउ इट्स आल्सो एक्सोसाइक्लिक टू दिस रिंग. इस रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक भी है. तो 5 उसके लिए ऐड करें तो वैल्यू इज 231 और 226 इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ. इस इनोन की जगह मैं एक डाइन बनाता हूँ और इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज हैं वो मैं लगाता हूँ. तो ये रिंग रेजिड्यू जो यहाँ पर था तो मैंने यहाँ लगाया और फिर इसके साथ ये वाला ऊपर वाला यहाँ हो गया और नीचे वाला यहाँ पर हो गया. ठीक है, आगे तो हम जा नहीं रहे. ठीक है, इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो. ऐसे इसको कनेक्ट करें तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई. इसको यहाँ पर कनेक्ट करें तो ये
6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। एनीवेज, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो, इंस्टेड ऑफ एन इनोन वी हैव दिस मॉलिक्यूल। अब ये डाइन है, ठीक है, और इसमें जो आपको सिस्टम नजर आ रहा है वो कितने कार्बन्स का है? 4 कार्बन्स का है, और वो 4 कार्बन्स ये हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब हम सिस्टम देखते हैं और फिर उसके साथ इंक्रीमेंट्स ऐड करते हैं तो जितने भी उसमें कार्बन्स इन्वॉल्व होंगे उसके साथ जो चीज़ें ऐड होंगी या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होंगे वो हम काउंट करेंगे। तो इस ट्रांसफाइड सिस्टम बेस वैल्यू क्या होगी? 214। अब देखें कि अल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज, अल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज, अल्काइल ग्रुप्स तो है नहीं इसमें, तो रिंग रेजिड्यूज कितने हैं? एक ये है इस डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के साथ एक ये है, और इस डबल बॉन्ड के साथ एक ये। तो हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यूज हैं, 15 इसके लिए ऐड करेंगे। सिस्टम वैसे ही ट्रांसफाइड है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यस, ये वाला जो है दिस इज एक्सोसाइक्लिक टू द फर्स्ट रिंग, द 5 मेंबर्ड रिंग, और जो नीचे वाला है दैट इज एक्सोसाइक्लिक टू द 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो है दिस वन इज एक्सोसाइक्लिक टू द 5 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज एक्सोसाइक्लिक टू द 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 10 ऐड करेंगे इसके, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। काउंट कर लें कितना बनता है? 224 प्लस 15 239। अब इसमें और इसमें आपको फर्क बता रहा था, फर्क ये बता रहा था जो मेजर डिफरेंस है कि इसमें जो इनोन सिस्टम है वो यहां से स्टार्ट होके यहां से और यहाँ पे एंड हो रहा है ऑक्सीजन पे, सेम जिस तरह ये डाइन यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन जब हम अल्काइल रिंग रेजिड्यूज की बात करते हैं इन केस ऑफ डाइन या पॉलीइन, तो हम देखते हैं कि इन डबल बॉन्ड्स या sp2 कार्बन्स के साथ दोनों साइड्स पे कहीं भी कुछ भी लगा हो तो हम उसको ऐड करते हैं और उसको कंसिडर करते हैं इस रिंग रेजिड्यू। लेकिन फॉर इनोन्स आप यहां से स्टार्ट लेंगे ऑक्सीजन से और आप इस साइड पे आएंगे, किस साइड पे? जिस साइड पे कॉन्जुगेशन हो रही है, ऐसे, और यहां स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। अब इस डबल बॉन्ड के साथ या इसके साथ अगर और कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, अगर इनके साथ कोई रिंग रेजिड्यू अटैच हो तो उसको आप काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 रिंग रेजिड्यूज हमने डिटेक्ट किए और इसके लिए हमने 24 लगाया। अब यहां ये जो sp3 कार्बन है इसके साथ जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है इसको हम रिंग रेजिड्यू कंसिडर नहीं करेंगे because it is not taking part in extending the conjugation, although these are taking part in extending the conjugation, hyperconjugation के जरिए ये कर सकते हैं, but we don't go on this side, ठीक है। इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, इस साइड पे इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए हम यहां पर आएंगे। लेकिन डाइन के केस में हम यहां से भी कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला बॉन्ड आप कंसिडर करेंगे लेकिन इसमें ये बॉन्ड आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अगर हमारे पास यहां एक और डबल बॉन्ड, तो अब आप देखें कि आपके पास 5 मेंबर्ड इनोन है, रिंग रेजिड्यूज हैं बीटा पे कितने? 1, क्योंकि अब ये तो रिंग रेजिड्यू नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम नाउ, तो ये तो हाइड्रोजन भी खत्म हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो CH3 ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप दैट यू हैव टू कंसिडर, और ये किस पोजीशन पे है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो डेल्टा पे आपके पास अब CH3 ग्रुप है, तो इसके लिए आप इंक्रीमेंट ऐड करेंगे और ये कहानी भी खत्म हो गई, क्योंकि अब ये भी sp2 हो गया है तो इसका तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का भी आप 30 ऐड करेंगे और होमो एनुलर डाइन सिस्टम भी है इसमें, तो 39 उसके लिए ऐड करेंगे। तो अब जो है आपकी बेस वैल्यू, सॉरी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि डाइन में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप दोनों साइड पे जाते हैं, लेकिन इनोन में आप सिर्फ उसी साइड पे जाएंगे जिस साइड पे डबल बॉन्ड मौजूद हो।
सेम यहीं पर ये वाला मॉलिक्यूल है, अगेन 5 मेंबर्ड रिंग में इनोन है, तो 202 इज द बेस वैल्यू। अब हमारे पास अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का अगर आप अल्फा पोजीशन पे जाके टेबल में देखें, वी ऐड 25 फॉर दैट। और रिंग रेजिड्यूज कितने हैं, अल्फा पे तो नहीं है, बीटा पे 2 रिंग रेजिड्यूज हैं, सो फॉर दैट वी ऐड 24। और ये चूंकि रिंग है, मैंने आपको कहा था कि ये जो जिगजैग लाइन होती है इट मीन्स के आगे कुछ है, बट चूंकि यूवी वो हमें दिखा नहीं सकता, इसलिए वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। तो ये रिंग है, इसीलिए इसको एक्सोसाइक्लिक यहाँ लिख सकते हैं हम, दिस 256 and the observed value is 251 nanometers. And finally we have this one, इसमें देखें तो 6 membered ring है, 215 base value होगी, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन जो है वो 30 ऐड करेंगे क्योंकि एक और डबल बॉन्ड अब आ गया है। रिंग रेजिड्यूज देखें तो अल्फा पे नहीं है, बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है और डेल्टा पे एक रिंग रेजिड्यू है। तो बीटा के लिए 12 और गैमा के लिए सॉरी डेल्टा के लिए 18। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज एक्सोसाइक्लिक, उसके लिए आप 5 ऐड करें। अब देखें प्रेडिक्टेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर है। So this is how you solve dienes and enones. But if we have unsaturated aldehydes, acids, and esters, then how you will apply the Woodward Fieser rules for calculating the lambda mix values. Okay, so if we have unsaturated aldehydes, you know, have a carbonyl group attached to a hydrogen on one side and an alkyl group on the other side. This alkyl group, if contains a double bond that is in conjugation with the carbonyl, then we can see a peak in the UV visible spectrum, and you can apply the Woodward Fieser rules again to calculate or determine the or predict the lambda mix value. So the parent value in this case would be 208 nanometers, and again we have alpha, beta, gamma positions. So if we have we have alkyl groups at alpha or beta positions, then the base value is 220. If we have alpha beta or beta beta alkyl groups, then the base value is 230. If we have alpha beta beta alkyl groups, then the base value is 242. So you can see that increasing the number of alkyl groups or changing the position of the alkyl groups may change the base value for these unsaturated aldehydes. And of course, you have to add increments for the exocyclic double bond if they are, but because it is an aldehyde, it cannot be present in a ring, but of course it can be attached to a ring that has double bonds. Then we have an ester, that is alpha beta unsaturated, and a carboxylic acid, and the base values for both of them are 208 nanometers. If we have alpha or beta alkyl groups, then you can increase the number of alkyl groups, or you can change the position of the alkyl groups, and you can see that the base value increases in nanometers. If we have an exocyclic alpha beta double bond, then we add 5, and we have endocyclic alpha beta double bond and 5 for 7-membered ring, then we add 5. So in this case, we also add increment for an endocyclic double bond as well. So this is how you can predict the values for these different types of molecules. Okay, if we have these carbonyl groups in conjugation with an aromatic ring, for example, we have carboxylic acid here. As you can see, we have a ketone here. We can also have an ester. We can have an aldehyde like this if R is equal to H. So if they are attached to an aromatic ring, then how Woodward Fieser rules can predict the lambda mix values. So if we have an alkyl group or a ring residue, that means we have a ketone in conjugation with an aromatic ring, then the base value is 246. If we have an aldehyde attached to a benzene ring, that is benzaldehyde, so the base value for benzaldehyde would be 250. If we have benzoic acid, then it will be 230. Or if we have an ester attached directly to the benzene ring, again we will have 230 as the base value. Now, as we saw in the previous case, we had alpha positions, we had beta positions, we had gamma positions. Now we have an aromatic ring, and in aromatic ring, you know that we
assign different names to these positions. So the one that is attached directly to this group is known as the ipso carbon, and the one that is next to it is the ortho position. Then we have the meta position, and then we have the para position, right? So this is also meta, and this is also ortho. So if we have groups attached at these different positions, they will affect the lambda mix value differently. Again, you know that they have electron donating, electron withdrawing effect, and that may extend the conjugation effectively or not very effectively. So you can see that if we have alkyl groups or ring residues at ortho meta position, then we add 3. If we have them at para position, then we add 10. If we have hydroxyl ether alkyl groups, then at ortho meta we have 7 to add, at para we have 25 to add. Then all of these groups, if attached at these different positions, will have an increment given in this table. So let's apply these rules to some of the examples here. We have a carboxylic acid here, and if you have a carboxylic acid, then the base value here you can see is 230 nanometers. So the base value is 230 nanometers. Then again, starting from here, that is the ipso carbon. We have ortho, meta, para, meta, ortho. And now you can see that we have 2 hydroxyl groups at meta positions and a hydroxyl group at para position. So you can see here that if we have a hydroxyl group at meta position, we add 7. So for 1 we add 7, for 2 we add 14. For the hydroxyl group at para position we add 25. The total is 269, and experimental value is 270. So it fits pretty much the actual lambda mix of this molecule. If we have an enone type of molecule, so we have a ketone right here, and the base value is 246. Now here is this is slightly different. Let's see how we can solve this. We have 2 rings. One of them is a benzene ring, the other is a simple carbocyclic ring. It's not conjugated on this side, but we have a double bond here that is in conjugation with this ketone. So जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें, जिस तरह इसमें था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, इसमें भी ये कार्बोनिल है, मतलब कीटोन है जो कि डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है. तो ये आपका एक तरह से इप्सो कार्बन होगा. जिस तरह ये आपका इप्सो कार्बन था, इस तरह से ये आपका इप्सो कार्बन है जिसके साथ डायरेक्टली ये कीटोन अटैच है. अब आगे तो हमने देखना नहीं है कि क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेशन सारी इस साइड पे है, बेंजीन रिंग भी इस साइड पे है, तो आपने जो इंक्रीमेंट्स ऐड करने हैं वो बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए ऐड करने हैं. अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है. अब ये जो ब्रोमीन है ये इस इप्सो कार्बन के रेफरेंस से किस पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे. ठीक है. सो इफ दिस इज इप्सो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा. आपके पास मेटा पोजीशन पे एक ब्रोमीन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन हो तो उसके लिए हम 2 ऐड करेंगे. बट व्हाट वी हैव हियर इज अनदर थिंग अटैच्ड टू दिस बेंजीन रिंग. एक्चुअली तो ये इसी रिंग का हिस्सा है या इसी चेन का हिस्सा है जो यहाँ से कार्बोनिल से स्टार्ट हुई है, बट यू कैन टेक इट एज अ ग्रुप अटैच्ड टू दिस कार्बोनेट. और ये ग्रुप क्या है? ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, रिंग रेजिड्यू भी हो सकता है. तो अगर ये ओपन चेन कुछ है तो अल्काइल ग्रुप कहेंगे, लेकिन अब ये इस रिंग का हिस्सा है, इस वाली राइट वाली रिंग का हिस्सा है, तो वी कॉल इट द रिंग रेजिड्यू. तो अल्काइल ग्रुप हो या रिंग रेजिड्यू हो, उसके लिए आप जैसे यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं, तो उसके लिए आप इंक्रीमेंट ऐड करेंगे. अब अगर आप देखें तो इसकी पोजिशन क्या होगी, तो विद रेफरेंस टू दिस इप्सो, दिस रिंग रेजिड्यू हियर इज एट ऑर्थो पोजिशन. तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑर्थो रिंग रेजिड्यू है, एंड फॉर दैट यू हैव टू ऐड 3, and the total now is 251. The experimental value is 253 nanometers. That again fits very well to the experimental values. Right. So this is all about UV visible spectroscopy. Thank you so much.